Good afternoon, everyone. So, meeting after a long time, so welcome you all back for the class. Before vacation, we started with chapter 3, two variables, right? And we go further with linear equation with two variables. I have already forwarded you a graphical method solution. I hope you have gone through it and understood the concept well. So do practice it for that. Now here we are going to deal with the linear equation with two variables. Apart from solving it, there are many more to see. So we'll go for those conditions today. When I introduced the topic, I gave you the conditions, right, for equation. So first let's go with the definition of linear equation with two variables here. So the definition says the a1x plus b1y plus C1 is equal to 0. That is, the definition says that when the two variables and linear, that means with the power 1. Okay. And the general form of it could be written as a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, where a1, a2, b1, b2 and c1, c2 are any real numbers. And as you know that it will not be 0, x and y variable are just a1, a2 and they will not be 0 at a time. Otherwise it won't be a linear equation with two variables, right? So you're familiar with this concept, right? And then we learned about different methods of solving it. Right now we are going to go with the condition for it. Now, when we talk about these two equations, so let us take one example here. Say suppose I take x plus y is equal to 5 and say other equation is 3x minus 2y is equal to 0. Okay, these are the two equations. Now, when I talk this equation and if I compare it with general form, how do I write the equation as x plus y minus 5 is equal to 0, and the other equation will be 3x minus 2y plus 0 or minus 0, anything which is equal to 0. And if I compare it with general form, what do you see? Here the a1 is 1, b1 is also 1, and c1 is minus 5. a2 is 3, b2 is minus 2, and c2 is 0. You know this when we used to do with the cross multiplication, right? When we used to compare it with a1, a2, b1, b2, and c2, right? So when we see this, okay, now we are doing the condition. Now, like when you draw the graph, I hope you must have tried the graph. And when you try the graph of the solution, you know that when like, the example when I did it, you saw that they were intersecting at one point. Now, either the lines will intersect with each other, or what kind of conditions do we get it? That is what called condition for the equations, right? So we saw that in the beginning of the session. Let's revise it quickly. So these conditions are there. When we compare it with the general form, this will help you to derive the condition. Now, what are those conditions? Let's see. There are many who are joining it recently. Welcome you all for the class. Just a quick recap what I said. I have just discussed the general form of linear equation with variables. I've taken one example here, and now I've compared it with the their coefficients here. So I've returned it. Now, if I recall your previous lesson, then you remember that when we compare this, okay, there will be some condition. I'm not letting that right now. But when we talk about the graph, okay, what is the graph? Since it is linear equation, linear means straight, isn't it? The straight line. Linear equation means you are going to get the graph in the form of a straight line. Now, when we draw two lines, since there are two equations, we get two lines. These two lines can be in what way it could be drawn. Okay, I put up a question that how do you draw two lines? When I say draw two lines, okay, so it could be done in different ways. And if I be precise, there could be only three ways to draw two lines, right? How is it? So that also one is they do not meet each other, okay? That is called parallel lines, okay? They do meet each other, so we call these as intersecting lines, okay? And the next one is, which we use it really in our real life,
but they meet each other at all the points, and we call it as coincidental lines. Okay, so here we call these as parallel lines. Right? Whenever we say like anyway, intersecting somebody, some children they said, then we draw perpendicular. But again, the perpendicular is type of intersecting. Then they intersect at 90 degree. We call specifically as intersecting line. But anyway, when they meet each other, we call them as intersecting lines. And when they meet one about the other, means that all the points are common. Here you can see only one point is common, whereas here all the points are common, and such lines call them as coincidental lines. So that means if you're given with the equations, right? And if I tell you, okay, these are the two equations, now you draw the graph. Okay, so what do you get? Either you get such kind of graph, or you will get this graph, or you get this one, right? It could be anyone, right? But without drawing it, how will I come to know that which kind of graph I get? Okay, that we are going to discuss here. Okay, kindly pay attention here. You are not here to discuss anything about your personal thoughts. Please pay attention here with the studies. Okay, so let's discuss how do we come to know what kind of graph we get it. Okay, for these three types of lines. So when look at this part now here, let's see what is the ratio of a1 and a2. Okay, so what is the a1 and a2 here? 1 and 3. So that is 1 by 3. Okay, the next is v1 upon v2. Okay, so what is it here? 1 upon minus 2. That is done as minus 1 by 2. Okay, the third one is c1 upon c2. Okay, which we get it as minus 5 upon 0. Okay, just for the timing, you consider this. We know that it doesn't exit, but just look at it. That what happens. So look, compare them. So when I see a1 upon a2 and b1 upon b2, we will not consider it if there are nothing comes equal here. Okay, so this is a1 upon a2 here. What do you say when you compare these two ratios? What do you get this? They are not at all equal, isn't it? b1 upon b2. So you don't need to consider here c1 upon c2, right? So look at these two ratios. Are they coming same? No. So a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. So in this condition, we get a unique solution. Means what would be the graph? What kind of graph you get it? It would be always be intersecting lines. Okay, and I think you have seen the video I sent you. I hope I have repeatedly said there, I'm really sorry for the repetition, but just to make you, understand. The main thing is to make you understand and to keep it in your mind this thing, that when you draw a graph for these kind of equation, it has to be a straight line. Okay, so be very clear for that. So I hope you understand this part. Okay? So intersecting lines and this kind of line. Now, maybe you are familiar with this. Now, what is the use of this? Okay, these kind of questions also come not only for the graph. You know that there is a definite question which comes to draw the graph of two given equations, but also there are questions which comes for 1 or 2 marks. That there will be some, out of the 6, even A2, B1, B2, C1, C2. Out of the 6, one could be as unknown. So maybe a P or K or X is given, and you have to find out the value. I hope I'm clear with my question. That we could be given with this kind of equation where one could be unknown. Okay, in that condition, how to find that unknown? And actually, it would be a reverse way now. See, the first is you're given with the equation. Please don't get confused. Then you're given the two equations, and you have to find out what kind of solution do I get it. So you remember that this type of kind of condition, we call it as consistent solution. What do you call it as? There are two types of solution: consistent solution and inconsistent solution. In the consistent solution also there are two types. So let's see what is that. So this, when you get a unique solution, we call it as consistent solution, and the graph is always that is intersecting lines. Okay, so if they ask you like verify whether the solution is consistent or not, the same method. Find out whether we get unique solution or not, then check whether the solution is unique or not. So you have to do the same method.
Now the reverse question is asked to you like this. I'll just make a bit change in the question. Say suppose I make this as K1. Okay, fine. Then naturally, what are you given here? And they will give you that there is a unique solution. ठीक है ना? देखिए पहले दिया हुआ है और आपको चेक करना है, तो कर लिया. अब आपको पहले से दिया होगा कि इसका यूनिक सोल्यूशन है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k. ओके, सो k is here, say minus k. Okay, and it's given that solution is unique. Okay, यूनिक सोल्यूशन का मतलब क्या, अभी जस्ट मैंने बताया. व्हाट इज द यूनिक सोल्यूशन मींस a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. ये आपको कंडीशन याद रखनी है. इंटरसेक्टिंग लाइंस, ओके, इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब यूनिक सॉल्यूशन. ओके, यूनिक सॉल्यूशन मतलब कंसिस्टेंट सॉल्यूशन. ओके, एंड कंसिस्टेंट सॉल्यूशन मतलब a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. ये सारा कनेक्शन में है. It could go this way implying, or it could go with the reverse implication also. So we know a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. So when we do this, we get this as 1 upon 3 not equal to minus k upon minus 2. Right? So when we do cross multiplication, it is minus 2. Or you could cancel this minus signs also. That would be easier for us. So it is 2 on k. Okay, and this is 2 upon 3. So you get this here. It is not equal to 2 upon 3. Why did I take this question as the first one? Please remember, this is one of the most important point where students get confused. Generally, this is find the value of k. ठीक है, पर आपने देखा कि यूनिक सॉल्यूशन में नॉट इक्वल टू आ रहा है. सो व्हाट वी गॉट, k इज नॉट इक्वल टू 2/3. ठीक है, पूछा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k. आई होप दैट इज यू नो बिट कॉन्ट्रडिक्टरी. तो जनरली आप क्या करते हो, k की वैल्यू फाइंड हो गई, आपने सम छोड़ दिया, बट यहाँ पे ये आपका हाफ मार्क कट कर देगा. जो भी होगा, यू विल लूज योर मार्क्स फॉर राइटिंग द आंसर. मैंने क्वेश्चन क्या कहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k. आपने क्या लिखा, k इज नॉट इक्वल. आई होप यू आर गेटिंग इट. तो बेसिकली आपको k किसको इक्वल है वो लिखना है. तो इन दिस केस k इज नॉट इक्वल टू 2/3. तो इन दिस केस आपका आंसर थोड़ा सा जनरलाइज आ जाता है, बिकॉज आप जानते हो कि ये सारे हमारे जो कोएफिशिएंट्स हैं, a1 a2 b1 b2 c1 c2, बेसिकली क्या है, ये रियल नंबर्स हैं. यू रिमेंबर दैट when we define the general form, we say that a1 a2 b1 b2 c1 c2 are real numbers. तो इसका मतलब हुआ कि k 2/3 नहीं होना चाहिए. तो k 2/3 नहीं हुआ तो क्या हुआ, तो कोई भी ले लो रियल नंबर में से. सो हियर द आंसर सेज k is any real number other than 5. I hope you got this. What does it say? That k is any real number other than 2/3. Please, please, please remember this answer. Like how to write the answer when the solution is unique. This is hardly for 2 marks question. I know it's very less, but it's one of the scoring question if it comes. और generally k का एक आता ही है out of this 3 conditions. Okay, so I hope you got it. You don't need to copy it. You just understand, and I will be sending you the notes. तो आई होप ये समझ में आया है आपको. ठीक है, थोड़ा सा मेथड के लिए मैं थोड़ी सी मतलब आपको पता कि आई ऑलवेज पुश यू टू राइट इट डाउन. एक चीज याद रखनी है, जब आपको दिया है यूनिक सॉल्यूशन, मतलब आप लिखोगे सॉल्यूशन इज यूनिक एंड देयरफॉर दिस. ठीक है, पर जब आपको चेक करना है तब आप पहले से नहीं लिख सकते हो that a1 upon a2 is not equal to b1. तब आपको पहले a1 upon a2 निकालना है, b1 upon b2 निकालना है, c1 upon c2 निकालना है, और फिर आप बोलोगे कि yes by observation this is not equal. I hope I'm very clear. So be perfect in your presentation part. Many of you send me the your answers that ma'am is it correct way of writing or thing. I don't mind checking it, but just one request to you that I have put my hard work in preparing the notes. तो जब मैं भेज रही हूँ तो आप उसको completely thoroughly, या तो दिल से मैं कहूंगी कि complete 100% आपके दे के you observe it. When you observe it, you will understand the pattern of writing. Right? मैं एक सम टाइप कर रही हूँ तो that is for you only. ताकि आप ऑब्जर्व करो कि अच्छा इसमें और ये मेथड में क्या अलग किया है, कैसे स्टेप्स लिखे हुए हैं. फाइन, सो बी वेरी क्लियर. सो लेट्स गो विद अनदर कंडीशन. ओके, मैं इसी को थोड़ा सा सिंपल वे के लिए आपके लिए कंटिन्यू कर रही हूँ. So let's take another example
ओके, मैं यहाँ पे ग्राफ नहीं ड्रॉ कर पा रही हूँ, रियली सॉरी फॉर दैट, ताकि मैं आपको दूँ आपको, बट यू कैन चेक इट दैट लेटर ऑल्सो। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और मैं दूसरा इक्वेशन ले रही हूँ 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब ये देखिए मैं दो क्वेश्चन बता रही हूँ, ठीक है। जानिए यूनिक सोल्यूशन के लिए भी कंसीडर a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2। जब ये a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 मतलब ये दो रेशियो इक्वल नहीं है, तो समझ गए हम की यूनिक सोल्यूशन है, हमें c1 अपॉन c2 को कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं है। फाइन, आई होप इट इज क्लियर टू यू। और बाकी के दो में आपको c1 अपॉन c2 को भी कंसीडर करना है, बट फॉर यूनिक सोल्यूशन लुकिंग एट द फर्स्ट टू ओनली यू कुड guess it or you can check it, right? Okay, so now let's take here पहला अब यहाँ पे मेरा क्वेश्चन क्या है, प्लीज इसको सुन लीजिएगा, आई एम नॉट राइटिंग। द क्वेश्चन सेज check whether the solution is unique, infinite, that is coincidental or parallel. Okay, that is consistent or inconsistent. Again I'm repeating, the question could be asked in two ways. The first one is check for the given equation whether the solution is consistent, मतलब कि या तो कंसिस्टेंट है या तो नहीं है, यानी कि इनकंसिस्टेंट है। ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, चेक वेदर द गिवन लाइन ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन और नॉट, या तो चेक वेदर द गिवन लाइन ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन और नॉट। ठीक है, तो हम चेक करना है, हमें चेक करना है यहाँ पे। तो मुझे क्या करना है, पहले तो कंपेयर करना पड़ेगा। तो पहले तो मुझे जनरल फॉर्म में लिखना है, ठीक है, तो ये मैंने जनरल फॉर्म में लिख लिया। अब मैं a1 लिख रही हूँ 1, a2 है मेरा 2, b1 है 1 अगेन, b2 इज ऑल्सो 2, c1 है मेरा -5 and c2 है मेरा -10। Okay, let's take the ratio now. So a1 upon a2 1/2, b1 upon b2 भी मेरा 1/2 मिल रहा है। Okay, and c1 upon c2 is -5 upon -10. That is on cancellation I get 1/2. So did you see this? So what do we get? What do you observe here? Both the ratios are equal. So a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. And that means there are, again, my first question, whether it is consistent or not. So yes, the solution is consistent. और या तो ऐसा होता है कि the system of equation is consistent. या तो yes, there are infinitely many solution for given equation. जिस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा गया है उसी तरीके आप आंसर yes या no में देंगे। I hope that is clear. और एक शॉर्टकट है infinitely many के लिए। अब ये देखोगे तो इस इक्वेशन को पूरा आपको ये आंसर मिल जाएगा, isn't it? तो आप बिना ग्राफ किए भी आपको समझ में आ जाएगा कि लेकिन इस इक्वेशन को 2 मल्टीप्लाई किया तो ये मिल रहा है। और आपने देखा हुआ ये हमने लीनियर इक्वेशन भी सॉल्व किए हैं, जब आप मल्टीपल टाइम्स में आते हैं तो उसके रूट्स यानी कि उसके सॉल्यूशन सेम होते हैं। यू रिमेंबर पॉलिनोमियल्स k टाइम्स लिखते हैं हम, तो सबके आंसर उसके जीरो सेम आते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे भी उसी तरीके से होगा। जब आप मल्टीपल टाइम्स इक्वेशन लिखोगे, मतलब ये 2 टाइम्स इसका है, तो डेफिनेटली आपका सॉल्यूशन सेम ही होगा। और जब सॉल्यूशन सेम है इसका मतलब यहाँ पे x और y की वैल्यूज सेम है, और जब x और y की वैल्यूज सेम है मतलब आपको सेम लाइन मतलब कि ओवरलैपिंग लाइन मिलेगी। आई होप दैट इज क्लियर टू। ओके, अब इसी का मैं दूसरा पार्ट ले रही हूँ। लेट्स टेक दिस एज k। फाइन, अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मुझे पता है that the solution is consistent, या तो दिया हुआ है that solution, there are infinitely many solutions, ये हमें दिया हुआ है there are infinite solution, okay, for these two equation. Now find the value of q। ठीक है, अब आपको दो अलग अलग क्वेश्चन समझ में आए। सी क्वेश्चन मैंने जो एग्जांपल बनाया वो सेम है बट दो अलग क्वेश्चन है, ठीक है। तो देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, हमें पता है, अच्छा मुझे पता है मतलब मैं पहले ही लिख दूंगी, दैट मींस a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2। ओके, और इस टाइप के क्वेश्चन आप कोई भी दो को यूटिलाइज कर सकते हो। इनफाइनाइट में 3 रेशियोज आपके आ रहे हैं तो आप कोई भी दो को यूटिलाइज कर सकते हो। सो using this I know that it is 1 upon 2
इज इक्वल टू मेरा यहाँ पे B2K है, तो इट इज 1/K, so क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आई गेट K इज इक्वल टू 2. ओके, मैंने बहुत ही सिंपल एग्जांपल लिया है यहाँ पे, बट इट कुड बी विद विद द कॉम्प्लेक्स टाइम, जैसे 2K minus 1, 3K, उस टाइप का भी होता है. वी विल बी डिस्कसिंग मोर कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स लेटर, बट सिर्फ समझने के लिए अभी जो मैं एग्जांपल ले रही हूँ. आई होप दैट इज क्लियर टू दिस. ओके, तो अब हमने सेकंड टाइप देखा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. Okay, that is clear to you. And then we move on to the third type. Okay, what is the third type? It says, आप जब क्वेश्चन देखोगे ना, आप मैंने एक एग्जांपल सेम क्यों लिया है, that also we will come to know. So please try to remember the concept or the question rather. Okay, चलिए देखते हैं. What is that now? So, और या मैं इसको इस तरीके से भी ले सकती हूँ. So I get this as 2x plus 2y minus 9 is equal to 0. अब जैसे कि शायद आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि मैम ये आपको ऐसे ही कैसे पता चला, then you can check, verify the graph also. When you verify the graph, you will come to know that whatever we are doing, it is absolutely correct. Okay, so now when we compare here, it is a1 is 1, b1 is 1, and c1 is minus 5, a2 is 2, b2 is 2, C2 is minus 9. And now when I check for the ratios, now हम अलग अलग ले रहे हैं क्योंकि यहाँ हमें पहले चेक करना है. सेम मेथड, सेम पैटर्न आई एम फॉलोइंग. तो ये मेरा मिलता है 1/2. फिर मैं अलग से कर रही हूँ, ठीक है. यहाँ हम पहले से इक्वल नॉट इक्वल नहीं लिख सकते क्योंकि हमें चेक करना है, हमें पता नहीं है, हम चेक कर रहे हैं. So 1/2 and C1 upon C2 is minus 5 upon minus 9, that is 5 upon 9. So आप यहाँ पे देख सकते हो, it is like a1 upon a2. क्या मिल रहा है हमें? a1 upon a2 और b1 upon b2 सेम है, पर c1 upon c2 सेम नहीं है. और ये जब कंडीशन होगी, तब आपका जो सोल्यूशन होगा वो इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन होगा. इसका मतलब क्या होगा कि आपके पास सोल्यूशन नहीं होगा. ओके, ये इनकंसिस्टेंट होगा. यहाँ पे इसको क्या कहेंगे, जब इस तरीके की कंडीशन मिलती है तो आप क्या कहोगे, द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट. ओके, तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो इस टाइप का जब ग्राफ होगा कि आपका ये वाला a1 a2 और b1 b2 का रेशियो सेम है पर c1 c2 डिफरेंट है, तब हमेशा आपको पैरेलल लाइंस मिलेंगे. ओके, यू कैन चेक इट, यू कैन वेरीफाई इट. कभी भी आप ये ऑब्जर्व करेंगे व्हेन यू गो फॉर द सॉल्यूशंस आल्सो, जब आप पूरे ग्राफ में या तो कोई भी रेफरेंस बुक या सॉल्यूशन बुक भी देखेंगे, यू कैन ऑब्जर्व द पैटर्न. जब आप कोई रेफरेंस बुक यूज करते हो डायरेक्टली कि मुझे ये चैप्टर नहीं आता, लेट मी लर्न द कॉन्सेप्ट, तो व्हाट्स द वे, ऐसा नहीं है कि बस आपने सॉल्यूशन देखा, कॉपी कर लिया, फिनिश. देन ट्राई टू यूटिलाइज इट. ओके, यू लुक एट द ग्राफ्स आर रेडी फॉर यू, already drawn. Okay, look at the pattern, observe the pattern. That will help you to understand the concept also. Okay, तो आपने नोट किया, what is the condition for parallel lines? a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2. फाइन, ये चेकिंग था. अगेन चेकिंग. और इसमें यदि आपको k फाइंड आउट करने का आया तो वो कहीं पे a1 a2 और b1 b2 पे ही होगा, c1 c2 पे नहीं होगा, बिकॉज वो नॉट इक्वल आता है. जनरली जो क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं मैं वो बता रही हूँ. जनरली इसके मतलब इसमें मैं आई थिंक द फाइंडिंग के इज वेरी रेयर जो मैंने ऑब्जर्व किया है. इट कम्स विद इनफाइनाइटली मेनी इज अ लाइक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन. और फिर आता है यूनिक के लिए. यूनिक के लिए आता है तो वो 1 मार्क या 2 मार्क्स मैक्सिमम. इनफाइनाइट के लिए आता है तो डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द क्वेश्चन कभी कभी वो 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में भी जाता है, बिकॉज मोर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हैज बीन मेड. ओके, तो इस पे जनरली फाइंडिंग के नहीं आता है, तो आपको याद रखना है. सो आई जस्ट क्विकली जनरलाइज दिस थिंग्स फॉर यू. ओके, फर्स्ट इज कंसिस्टेंट. और जब कंसिस्टेंट है तो आपके पास दो है, वन इज यूनिक and the second is infinite. And what is the condition for it? Here यूनिक के लिए a1 upon a2 not equal to b1 upon b2, और आपका infinite के लिए क्या आ जाता है, a1 upon a2 equal to b1 upon b2
इक्वल टू C1/C2. ओके, आई थिंक ये टेबल मैंने ऑलरेडी फर्स्ट बिगिनिंग में फर्स्ट जो अपनी वर्कशीट थी उसमें बना के दे दिया. द सेकंड इज इनकंसिस्टेंट. maybe mistake in hand. Okay, so here the solution is parallel, means I need to say that line will be parallel lines. Is that infinitely? Here unique solution, here no solution. Sorry, I just mistake one no solution. और यहाँ पे आपकी लाइन क्या होगी? Intersecting lines. I'm sorry. Okay, ग्राफ किस टाइप का होगा? Intersecting. यहाँ होगा coincidental और यहाँ होगा पैरेलल. पैरेलल मतलब कभी मिलेंगे ही नहीं, और जब मिलेंगे ही नहीं तो उन्हें सोल्यूशन कैसे मिलेंगे? फाइन. सोल्यूशन क्या होता है? जब एक दूसरे को लाइन जहां जहां मिलती है वो सोल्यूशन होती है, राइट. वो पॉइंट्स जो होते हैं वो सोल्यूशन होते हैं. तो यूनिक सोल्यूशन मतलब इंटरसेक्टिंग ईच अदर, तो एक ही पॉइंट पे मिलते हैं, एक सोल्यूशन मिलता है. एक सोल्यूशन का मतलब यूनिक सोल्यूशन होता है. सेकेंड में कोइंसिडेंटल लाइन है, तो हर एक पॉइंट कॉमन है, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन है. ठीक है. और जो थर्ड वाला है तो पैरेलल लाइन से मतलब वो एक दूसरे को मिल ही नहीं रहा है, और एक दूसरे को मिल नहीं रहे तो उनके पास कोई कॉमन सोल्यूशन नहीं है, कोई कॉमन पॉइंट नहीं है. कॉमन पॉइंट नहीं है मतलब कॉमन सोल्यूशन नहीं है. आई होप दैट इज क्लियर. और यहाँ पे अपनी कंडीशन क्या है? a1 upon a2 equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2. I hope this is clear to all of you. ठीक है. तो इसमें जो फाइंडिंग के वाले क्वेश्चंस है दैट वी विल बी डिस्कसिंग फर्दर, सो प्लीज पे अटेंशन. यहाँ पे इसमें कुछ डाउट है तो प्लीज आई थिंक यू कैन आस्क मी योर डाउट्स. नाउ आई एम वाचिंग योर कमेंट्स, सो प्लीज लेट मी नो. I'm waiting for your comments, please. Any doubts? It's for everyone that you don't have any doubts. Can we go further? Yes, children. I've written only there are 2 or 3 who are saying they don't have any doubts. What about the rest of the children? Quickly. वैसे तो हमारे पास सारे बच्चे इतने बिजी हैं कि उनके पास टाइम ही नहीं मेरी क्लास अटेंड करने के लिए. Okay, I would. Okay, somebody is asking Asta. Yeah, Asta is having the doubts. I'll clear it your doubts. Okay. When I say suppose x is equal to 2. Okay, x is a real number and x is equal to 2. So you understood that okay, 2x is a real number and 2 that is one of the value of it could be real number. Okay, if I tell you give me any value of x which is a real number. Now what are the options for you? There are infinite options for you. If I ask individually, यहाँ पे भी फिलहाल 41 दिख रहे हैं. So naturally, I will have 41 values and even more than that, because you know that real number मतलब हमारे पास infinite value है. It could be √2, it could be 0.0003, it could be any value, right? But if I'm saying x is not equal to 2, इसका मतलब क्या हुआ? I hope you get it. X is not equal to 2. मतलब कि आपको इतना समझ में आया कि x को हमें 2 नहीं लेना है. अच्छा 2 नहीं लेना है तो क्या लेंगे? Are you with me? 2 नहीं लेंगे तो क्या लेंगे? तो मैंने पहले ही बताया कि x is a real number.
तो इसका मतलब ये हुआ कि सपोज इफ आई ड्रॉ अ नंबर लाइन ओके ऑफ रियल नंबर्स, कुछ भी यहाँ पे -1 -2, तो इस 2 के अलावा, दिस पॉइंट के अलावा यहाँ से आप कोई भी वैल्यू पिक कर सकते हो, यहाँ से आप कोई भी वैल्यू पिक कर सकते हो, ठीक है। सो दैट मीन्स इट कैन बी एनी रियल नंबर other than 2. I hope that's clear, Asta, to you. Yes? I just want you to respond me so that I can go ahead with the next. Yes, children, is it clear to everyone? Okay, and so based on this, we have the questions. Say 2x plus 3y is equal to 7 and 2k minus 1, okay, plus 2y, okay, is equal to, say, k. So now let's find the value of k. Fine, did you get this? Okay, so when we solve this, now how to go further with this? So simply यहाँ पे हमें k फाइंड करना है, और जब हमें k फाइंड करना है, so we know or we should know some relationship about it, isn't it? तो यहाँ पे मुझे कुछ तो देना चाहिए आपको. I'll tell you, okay, find k. So I need to give you some option, isn't it? So what is it? Like option could be unique solution or no solution or infinite solution. Okay, let's take it for infinite solution. So system has infinite solution. Okay, and when the system has an infinite solution, that means a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c2. Okay, now I'll just guess the question. Just give me a minute so that I can just make it out clear. Okay, I will just make it as okay. So I'll just tell you how to find it out roughly. I'm just taking approximate question. May not be condition perfect, but just I'll tell you how it works. Okay. So a1 upon a2 is 2 upon 2k minus 1. b1 upon b2 is 3 and 2 something. I've just taken roughly, so may not be perfectly satisfying the condition. Just let's take it as the example. 7 upon k. Now, here you know that it satisfies some conditions. So you can compare them like this, and you can find out the value. So you could be, I'm just taking a general example here. I'm not a perfect example. Please mind it. So you may not be getting the same values. So please understand it. Or we will be discussing this in the later questions also, where we can find out more about finding k. So what you can do is, I'll just tell you hint of it, because I'm not taking perfect question. Please remember this. So either I can compare this to, or I can compare this to, or I can take it as like this too, because आपके पास तीन चीजें को है, so you can make the pair of first and second, second and third, or first and third, and you can solve the equation further. But this is one of the most important questions, so I will be discussing with you about more about it in the later classes. Fine, I also don't want to do it. Just roughly I'm giving you that it could be like this. I hope that is clear to you. We will be solving this type of question further in our next class, right? So if tomorrow your schedule is bit less, please let me know, so that in this week only we can conduct the class and we can finish off this one. Okay? I hope this is clear to you. I'm putting the attendance here as well as in the Google Sheet. So as well as in our group and Google Class. So please put your attendance without fail. And if you're watching me later also,
Children, it's a request that you please put the attendance. I hope that is clear to you. Thank you all. I hope you understood the concept. Okay, and this is being one of the important concepts. I don't want you miss it out and just make a mess with the wrong example. So we will be discussing board class examples in the next class. Okay, thank you. Thanks a lot. I'm putting the attendance, so be careful, please.